हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट शो है। आज हम लिक्विड स्टेकिंग पे ये शो डेडिकेटेड है कि लिक्विड स्टेकिंग होती क्या है और लिक्विड स्टेकिंग में इश्यूज क्या है। आप ये देखिए ना कि इमेजिन करिए कि जिस हिसाब से आप लिक्विड स्टेकिंग बढ़ रही है, आप एक ईथ के बदले में आपको एक एसटी ईथ मिल जाता है। फिर इट्स लाइक कि आप बैंक के अंदर जब आप पैसा जमा करते हो आपको एक एफडी मिलती है, राइट? और वो एफडी का जो पेपर होता है, वो उस पेपर को आप आगे ले जाते हो और आप प्लेज कर देते हो। जैसे आपके पास शेयर्स होते हैं, उसको भी आप प्लेज करके आगे लोन ले लेते हो, राइट? सो सिमिलरली आप जब ईथ में स्टेकिंग करते हो, तो आप इथेरियम को जब आप स्टेकिंग के लिए करते हो, तो आप उसके बाद आपको बदले में एक एसटी ईथ मिल जाता है। और उस एसटी ईथ को, राइट, आप ले जाके प्लेज कर सकते हो। आप उसको जैसे आप उसके साथ स्टेक कर सकते हो, आप उसको लेंड कर सकते हो। सो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद एसटी, लाइक क्योंकि आपका इथेरियम तो लॉक्ड है। तो एक लिक्विड स्टेकिंग पिछले कुछ महीनों के अंदर इतना बड़ा हो गया है कि मतलब द नंबर्स आर स्टैगरिंग। बट उसके अंदर एक इशू भी है, एक रिस्क बढ़ता जा रहा है। आज वो रिस्क को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर अल्टीमेटली तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, और अगर इतना इतना ज्यादा पैसा स्टेक पे लग रहा है, और अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है पीछे वल्नरेबिलिटीज हो कई बार आ जाती है। हम तो आशा ही करेंगे कि ना हो, लेकिन जितना बड़ा गेम बनता जा रहा है लिक्विड स्टेकिंग, और अगर खुदा ना खास्ता कल को अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक हो जाए तो क्या होगा, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट? और क्या एसटी ईथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इथेरियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? और अगर नहीं भी आता है तो एसटी लिक्विड स्टेकिंग का फ्यूचर क्या है, एंड इसके लिए इथेरियम के लिए क्या है, इसके इसके मायने हैं। और इसको बात करने के लिए आज हम स्टेडर लैब से जो को फाउंडर है अमित, उनको हमने बुलाया है। वो लिक्विड स्टेकिंग के एक्सपर्ट है, लिक्विड स्टेकिंग के बारे में बात करेंगे। प्रणव तो है ही, प्रणव ने ये शो डिसाइड किया था कि काशिफ भाई, लिक्विड स्टेकिंग पे बात नहीं हो रही है इतनी जितनी होनी चाहिए, और पीपल आर अपबीट अबाउट इट, बट दे डोंट नो दैट देयर आर सर्टेन वल्नरेबिलिटीज अटैच्ड टू इट, एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू दिस, राइट? तो इसको हम बात करने की कोशिश करेंगे। अमित भाई, वेलकम आपका वेब3 की दुनिया में। और आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आई डोंट नो इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी और यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, आई रियली डोंट नो। I'm very comfortable with English. Hindi is like okay. Okay, so keep a mix of both. That'll Yes, be great, yes, right? I will Because try. audience Hindi based hai, and the whole objective of this show is to uh, keep it simple initially, and then maybe you can grow on as the conversation moves ahead. So Pranav, Yeah. welcome, and Pranav, what is your thought on today's show? राइट, आई वुड से अभी लोग लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेकिंग का पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में जब प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर इथेरियम चलता था, तब इतना ज्यादा स्टेकिंग और इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, क्योंकि अगर आपको एक अगर इफ यू वांटेड टू अर्न सम एपीवाई ऑन टॉप ऑफ इथेरियम, सो देयर वर अदर मींस। नॉर्मली लोग लिक्विड स्टेकिंग नहीं करते थे, ये सब चीजें, या फिर they did not used to put money in the ethereum protocol and earn. But when the protocol of ethereum shifted from proof of work to proof of stake, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इथेरियम को स्टेक करना चालू किया। उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने। स्टैडर एक प्रोटोकॉल है, लाइडो एक प्रोटोकॉल है, रॉकेट पूल एक प्रोटोकॉल है। और इनका कुल मिला के जो मार्केट कैप है, वो मैं अगर अभी बताऊं तो इट इज वेरी इट इज राइजिंग एवरी डे, एंड इट इज at a stage where it's like 1/3 of the market cap of ethereum in some days, or it will reach. So, and in general this is more of a DeFi kind of a protocol, जिसमें आप इथेरियम को लेते हो। आपके पास इथेरियम अभी $1800 का है, उसको आपने होल्ड करके रखा है बिकॉज यू थिंक दैट इट्स एन एसेट दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, एंड इट हैज सम काइंड ऑफ अ यूटिलिटी इन जनरल। दैट इज व्हाई यू कीप इथेरियम। बट लोग इथेरियम को मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इनकम की तरह से यूज नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव सम काइंड ऑफ अ इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, और इसीलिए लोग इन्फ्लेशन को बीट भी करना चाहते हैं, प्लस दे वांट सम एपीआई ऑन टॉप ऑफ इथेरियम, यानी एनुअल परसेंटेज यील्ड। तो वो इथेरियम को स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स में डालते हैं। वो स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स वैलिडेटर बनते हैं इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक चेन के ऊपर, एंड देन you get some kind of a liquid staking ornament which can be called as ST ETH, Lido ETH, या फिर स्टैडर के केस में इथेरियम एक्स है, शायद ETH X है, right? ETH. ETH X. So you get all these and there are different APYs you get on top of Ethereum. Suppose आपने 10 Ethereum रखे, तो 10 Ethereum के ऊपर लाइडो में आपको अलग APY मिलेगा, रॉकेट पूल पे अलग APY मिलेगा,
स्टैडर के ऊपर आपको अलग एपीवाई मिलेगा, और इन एसटी इथेरियम्स, रॉकेट पूल इथेरियम्स और ईथ एक्स को भी आप कहीं ना कहीं स्टेक करके चीजों को और ज्यादा अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। पर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स का यूज करते जाते हो, वैसे वैसे आप अपने इनिशियल अंडरलाइंग इथेरियम के एसेट को थोड़ा सा डेंजर में डाल रहे हो, बिकॉज डीफाई इज नॉट एज सिक्योर एज वी always dream of, and there are issues that might exist over that. तो उसी के लिए हम बात करेंगे अमित से, विल डिस्कस इन डिटेल कि लिक्विड स्टेकिंग किसको करनी चाहिए, लिक्विड स्टेकिंग के फायदे क्या है, क्या नुकसान है, क्या आपको माइंड में रखना चाहिए लिक्विड स्टेकिंग करते हुए, और स्टैडर ने क्या किस किस तरह के चीजों को यूज किया है ताकि वो लोगों कॉन्फिडेंस जीत पाए इन टर्म्स ऑफ when people come and stake Ethereum. So Amit, welcome to the show. First of all, before we get into these massy questions, like the ones which rise your ears, उसके पहले हम समझना चाहते हैं कि how did you, I think you were one of the first validator ecosystem on Terra. उसके बाद you were one of the first validating ecosystem on Near and stuff like that. So आपको ये staking, liquid staking के जोन में इनोवेट करने का आइडिया कब आया Web3 के अंदर, and how did you and Stader get started in the liquid staking phenomena? The graph is a indexing protocol, ठीक है, और जो ये प्रोटोकॉल है इसकी डिफरेंट डिफरेंट कोर डेव्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो इसको कुल मिला के प्रमोट करती हैं। ग्राफ एडवोकेट्स डाओ इज वन ऑफ दोज कम्युनिटीज जिसके तहत अगर आप द ग्राफ प्रोटोकॉल की जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी नॉलेज है, उसको अगर फैला रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको ग्रांट बेस्ड इंसेंटिव मिलता है उसको करने के लिए। हमने ग्राफ के ऊपर 3 एपिसोड्स बनाए थे और ग्राफ की रेगुलरली, द ग्राफ प्रोटोकॉल की रेगुलरली बात करते रहते हैं, इसलिए द ग्राफ एडवोकेट्स डाओ वाज ग्रेट इनफ टू ऑफर अस अ पर्टिकुलर ग्रांट। पर इसमें आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको लेके हम एक पूरा एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हो। पर अगर मैं रफली बताऊं तो एक तरह से ये लोग ग्रांट्स प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप ट्विटर पे थ्रेड्स बनाते हो बहुत अच्छे अच्छे और आपने ग्राफ को बहुत अच्छे से समझाया, या फिर आप एक कम्युनिटी मैनेजर और आपने जैसे किसी ने अफ्रीका में मीटअप किया है जिसके कारण बहुत ग्राफ का प्रमोशन हुआ और प्रमोशन एज इन एजुकेशन बढ़ा ग्राफ को लेके, तो अगर आप ये सब एक्टिविटीज करते हो तो आप ग्राफ एडवोकेट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। वंस यू आर एन एडवोकेट देन यू कैन एजुकेट द कम्युनिटी वाई डिफरेंट मीन्स, जैसे आप टेक्निकल टीचर बन सकते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, इवेंट एवेंजलिस्ट बन सकते हो, कम्युनिटी कॉल्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और आपको बेस्ड ऑन द टाइम यू आर गिविंग यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड बाय द डाओ वाया अ ग्रांट प्रोग्राम। ठीक है, हमको भी ऐसे ही मिला है ग्रांट, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू चेक आउट देयर ट्विटर as well as their discord and just look into what can be the opportunities that you can get in this. अगर आप यंग हो, अगर आप कॉलेज के अंदर हो, मैं आपको डिस्कॉर्ड की लिंक भी दे दूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ डिस्कॉर्ड की भी लिंक। अगर आप यंग हो, कॉलेज स्टूडेंट हो जो जानना चाहता है या फिर एडवोकेट्स प्रोग्राम के तहत ग्राफ को प्रमोट करना चाहता है एंड वांट्स टू गेट सम ग्रांट्स फॉर द सेम, ही कैन आल्सो डू समथिंग लाइक दैट। अभी रिसेंटली एक ग्राफ गुरु के तहत, अगर आप लोगों को पता हो तो ग्राफ गुरु के तहत ये एक इनिशिएटिव था जो ग्राफ एडवोकेट्स डाओ ने प्रमोट किया था, जिसमें अगर आप ग्राफ के कुछ चैलेंजेस कवर कर लेते हो तो यू वुड बी गिवन अबाउट 210 GRT which is about $21, काफी अच्छा अमाउंट है। अगर आप चैलेंजेस पूरे कर लेते तो आपको मिलता। सो माय एक्शन आइटम टू यू वुड बी कि आप डिस्कॉर्ड चेक करो इनका, ट्विटर चेक करो इनका वेबसाइट चेक करो, एंड इफ इट इंटरेस्ट यू देन यू शुड अप्लाई टू बी अ ग्राफ एडवोकेट, एंड ऑलवेज रेफर की वेब3 की दुनिया से हमको इसके बारे में पता चला है, एंड वी आर वेरी वेल नोन इन द वेब3 वर्ल्ड, एंड द ग्राफ के बारे में भी हमको वेब3 से पता चला है। यू कैन इवेंचुअली गेट इन्वॉल्व इन द इकोसिस्टम, earn some grants as well as promote the graph protocol around the world. This is one of the great ways ताकि हम community को incentivize कर सकें ग्राफ को प्रमोट करने के लिए। So this is the Graph Advocates DAO and they are the sponsors of this particular show.
For sure. Firstly, thanks Pranav and Kashif for having me on the show. Have been a great fan of your work, and finally, I'm so glad to be here. And to all the viewers who have tuned in today, thanks for watching this. Really looking forward to this conversation. So, pehle cheese like I got into crypto. I'm originally a very Web2 traditional company kind of a guy. So I used to work with Swiggy before I got into crypto in 2020. I was inspired by my co-founder Siddharth, who was a very like OG Bitcoin and Ethereum miner started in 2012. So he actually helped me understand the space, and I got very deep into the space, simulated some of the protocols and all the DeFi applications that were being built. During the 2019 में जब DeFi summer हो रहा था 18-19 में तब like all of the things that I got a sense, and then I wanted to start something in the space because ये काफी revolutionary space बन रहा था like crypto and the entire blockchain industry. So entire financial applications को they were just completely rewriting the way financial applications were being built, right? And that got me really excited, and that's what got me into crypto. Now within crypto, so like I also had a background in consulting. So I used to do strategy consulting before Swiggy. So I actually looked at the entire spectrum of applications that were being built in crypto, and hands down the biggest market size was staking back then and even now, right? The trend was very clear. Entire blockchains were moving to proof of stake. Proof of work it was great when it was invented, but proof of stake was a lot more efficient, more environmentally friendly, and there are a lot of other benefits to proof of stake. So it was very apparent to us that proof of stake is the one that is going to be the premier, or rather most widespread consensus mechanisms, right? So that's what got us excited about staking and proof of stake. Now, obviously, there were several problems within the staking landscape that we wanted to solve. And we wanted to pick one blockchain. Back then, Terra was like really growing ecosystem and billions of dollars of capital that was locked on Terra blockchain, and some interesting real world applications like savings bank, which is called Anchor, Mirror, which was a synthetic assets protocol. There were a lot of nice applications that were being built on Terra. In hindsight, all of them went bust, but that's a different conversation altogether. But this was what got excited. It got us excited about Terra blockchain. So we started building liquid staking on Terra, and Terra was a very very interesting use case for stakers because Terra ने staking rewards 10 या 15 different tokens में दे रहे थे उस time पे. They were giving staking rewards in Luna, UST, KRT, SGD, all of these, right? And people were facing real problems in terms of how do they convert all of these different staking rewards into Luna, because they were staking Luna to get Luna, right? And similarly, there were a lot of tax implications of claiming these staking rewards in different tokens and converting all of that. So huge problems across the board. So that's why as soon as we launched our liquid staking solution on Terra, we got to about $1 billion in assets or TVL within a couple of months. So जब I think हमने November 2021 में launch किया था Terra पे first staking product, January February में we got to about $1 billion in TVL without any token, with just like bare basic incentives that we had given to these users, right? Kafi users, they almost 30-40,000 unique wallets were staking with us across multiple protocols, right? And we didn't have any major DeFi integrations also till then. And what happened after that is history. Everybody knows about the Luna collapse and all of that. So we'll probably go into those things later. Just But coming back to Stader. But you guys were the highest, one of the highest staking protocols. Well, you are the Lido of Terra in a way. We were like Lido was also there on Terra, but we did have a very differentiated value proposition on Terra. Yeah. So yeah, absolutely. So
So that was the story behind Terra, and then obviously we wanted to continue the liquid staking journey. So we expanded to multiple blockchains. We expanded to Polygon, BNB, Hedera, Phantom, all of that. Some didn't really scale, but some scaled up very well. Like for example, Polygon, we are close to about 100 million Matic staked with us. Over 20 plus DeFi integrations across Aave. Compound just is going to go live in a couple of days. Balancer, QuickSwap, you name it, like all the DeFi protocols accept our liquid staking token on Matic. Now we just launched Ethereum about a month ago, already at $25 million worth of TVL, integrations across 3 or 4 dexes already, talking to several other protocols. Apart from this, multiple other distribution partners have integrated us. Ledger, जैसे हमारा like one of the major hardware wallets has integrated us on Polygon and BNB staking. Similarly, OKX wallet has integrated us. Even MetaMask has enabled staking with Stader on Polygon network. So these are all the things that we have been doing over the last 1 year since Terra collapsed. Right. But that's definitely an interesting story, and I would say you are one of those founders, jisne like you saw $1 billion in TVL on Terra, then saw like a big decline, and then again saw a big move upside. So how was it like कि जब like you have seen a protocol being crashed and then winning the मतलब कैसे being मतलब वो एक तरह से आपने तो हैक नहीं किया था, Stader के smart contracts hack नहीं हुए थे, everything was great there, but what happened was something related to Terra. But how did you win like people's trust back that yes, like liquid staking is a thing and you can still do it on Stader on different protocols? So how was that particular journey of being on Terra, being a $1 billion TVL protocol, and then rising up again on Polygon, Ethereum, and Phantom? Yeah. So in simple words, it's like starting 7 different companies, because each blockchain is like a different. It's a different user segment, different language, different implementation, different set of partners. Of course, EVM chains, Polygon, ETH, Phantom have some similar ecosystem partners, but their implementations are very different. So in a nutshell, like I would say, in 2 years, I started like 7 different protocols on each of the chains. Some did really well, some haven't done as well as we expected. But yeah, the experience is like starting 7 different companies. Right. And why do you think ki Polygon pe you guys got the breakthrough? Like, is it because the market cap, like not many people were focusing on Polygon and you were one of those? Or what was the reason why like you were able to have like $100 million in asset under management for Polygon? So it's 100 million Matic. Yeah. Dollar price is like dependent on the market, but I think Polygon has a very vibrant DeFi ecosystem, and obviously there is Aave, right now there is Compound. There are a lot of other interesting DeFi protocols as well that are on Polygon, likes of Balancer. We also have Curve, Uniswap, and a lot of other dexes, right? And in terms of our growth on Polygon, we were obviously Polygon is a great ecosystem. Like the founding team kind of inspires us with what they are doing every day in day out. There is a lot of interest among even the distribution partners in terms of integrating us on Polygon and BNB for that matter. So Ledger, which is the hardware wallet, one of the largest ones, they integrated us on Polygon. So that means there is a good amount of TVL from there. So we also have a lot of people borrowing against the liquid staking token on Aave. So all of those kind of added and sort of helped us grow to 100 million TVL on Polygon. It's not that there are no other players. There is Lido as well. We are like almost close to Lido in terms of market share. There are a few other players like Playstack and a couple of other players who started out, but like I would say, Lido and us are the top protocols, right? And Lido and we started at the same time. And then obviously, like we consistently ensured that we were focused on growing the ecosystem, growing the user base, as well as growing the distribution. So that's why we are where we are on Polygon. What's the difference between मतलब अगर कोई इंसान के पास अभी अपन पॉलीगॉन या फिर इथीरियम की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास पॉलीगॉन या इथीरियम एसेट है
अब वो देखेगा इतने सारे लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, रॉकेट पूल एग्जिस्ट करता है, लाइडो एग्जिस्ट करता है, स्टैडर एग्जिस्ट करता है, क्ले स्टैक एग्जिस्ट करता है, टेंडराइज भी एग्जिस्ट करता है. So what's the different value propositions of all these protocols? And like, as a person who wants to do some liquid staking, अगर या फिर वो ट्राई करना चाहता है, उसको किस हिसाब से वैल्यूएट करके अपने पैसे डालना चाहिए? Gotcha. Pehle, like I am assuming that the users who probably are going to tune in, they're familiar with liquid staking. Should we try and explain the differences between staking and liquid staking first before we get Yeah, into the maybe next level of detail? we can start that. Cool. We can start with that. Cool. Cool. Makes sense. So staking is nothing but like you pledge your tokens or to a validator, and though that validator uses your tokens to actually validate on the network. That means he keeps signing the transactions every block so that the blockchain kind of propagates, right? That is in a nutshell what staking is. So when you actually, why would anybody want to pledge their capital, right? Why would you want to actually lend your tokens to somebody? Because you will get some rewards or returns in return, right? Simple concept. Why would you want to stake your tokens? When you stake your tokens, you get some extra rewards from the network. So validator gets those rewards. My one point here, most of the people even today in this space confuse staking with lending. So I would like you to make a difference here, that what is the difference between lending and staking, because they are very, these terms on paper look very similar, because the moment you say reward, so they, okay, I'm lending my stuff. But what is the difference between lending and staking? It is very important for people to understand. Gotcha. So, yeah, let me try and simplify that. Both are very, very different, though on the surface, like when you lend your tokens, you get some return. When you stake your tokens, you get some return. The output is same, but the underlying mechanism is very different. So when you lend your assets or when you lend your tokens, so those somebody is using those tokens to generate returns somewhere else. Like for example, when you lend your very simple terms, when you lend your INR or deposit your INR on a fixed deposit or a savings account, your bank is using that money, not entirety, maybe a portion of it. In a fractional banking system, they use like multiple times of it. But when you are depositing or lending your assets to someone or a bank, the bank or someone is using that to generate returns in some way. That means they in turn are lending those assets to somebody in the form of loans, etc., and generating money, right? And they take a commission and pay the rest of it to you, right? But in staking, what you're doing is your assets are locked on a blockchain with a validator. They are not being used by somebody and given to somebody for something, some other purpose. The only purpose for staked assets is to provide security to the network. Assume without those staked assets, it is very easy to actually commit fraud on the blockchain, right? So very simple difference. When you are lending your assets, somebody is using those assets to further lend or participate in speculative activities to generate returns. When you are staking your assets, you are simply pledging those assets on a blockchain with a validator, and those assets stay as is. Nobody can actually take those assets and put them for other use. The only use of these assets is to provide security to the network. And what about the returns? Are the returns fixed in? So people should also understand the difference. The returns are fixed in lending, and returns are also fixed in staking, or it can differ. It can differ. Like जैसे lending में there are floating interest rate bonds, etc. Right? Similarly, staking also, it depends on the network transactions. If there are like huge number of network transactions, some blockchains pass those directly to stakers. Some blockchains have a fixed staking rate. Like for example, Matic has a fixed staking rate of about 4.8, 4.9%. ETH has a floating staking rate because majority of the transaction revenue and MEV revenues are coming to stakers. Right. Thank you very much for simplifying it, because I tell you, most of the people I meet at times,
they say that it's like lending. No, so many people don't understand that lending and staking are very different, and the use case is very different. Thank you for simplifying it. So please carry on, Amit. या No problem. सो So अगर coming, go on. या काशिफ भाई, आप अगर बता रहे थे लोगों को कि अगर आप लेंडिंग और स्टेकिंग को कंपेयर करो तो बैंक के हिसाब से लेंडिंग इज लाइक आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल रहे हो जिसको लोग यूज करेंगे अपने लोन लेने के लिए एंड स्टफ लाइक दैट, बैंक यूज करेगी। और दूसरी तरफ आप अगर स्टेक कर रहे हो तो आप एक तरह से एफडी करा रहे हो ताकि लाइक इट स्टेज देयर एंड पीपल कैन द बैंक यूजेस इट फॉर नहीं, डिफरेंट थिंग्स, ऑल्दो इट्स I नॉट think रिस्क बेस्ड, पर नहीं हाँ नहीं नहीं, ये सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, तुमने एक नई बहस छेड़ दी, एक नई डायरेक्शन में। बैंक को जब हम पैसा दे रहे हैं तो अमित ने बहुत अच्छी टर्म यूज करी, हम लेंड ही कर रहे हैं। जब एक तरीके से जब हम बैंक को पैसा दे रहे हैं, वो मुझे सेविंग अकाउंट पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 3-3.5%, और बैंक उस पैसे को आगे यूज कर रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर केस ऑफ लेंडिंग है। चाहे वो मैं एफडी में भी दे रहा हूँ, एफडी में भी मुझे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। लेकिन सपोज करो बैंक ये बोले कि यार मैं ना एक्सपैंड कर रहा हूँ और मैं अपनी ब्रांचेस को साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और फिजिकली सिक्योर करना चाह रहा हूँ, क्या आप उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी में पार्ट लेना चाहते हो? मतलब देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन दैट, एंड आई वांट टू सिक्योर द बैंकिंग सिस्टम, एंड उस जब मेरा सिक्योर करने से जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा ना बैंकिंग का, तो उसमें से मैं कुछ शेयर आपको दे दूंगा। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वहां रिस्क है स्टेकिंग में। स्टेकिंग में रिस्क क्या है? हो सकता है कि ब्लॉकचेन हैक हो जाए, हो सकता है कि ब्लॉकचेन पे आपको वो वैलिडेटर को कंफर्म नहीं होता है रिवॉर्ड मिलना। अब जैसे मैटिक तो चलो 4% 6% फिक्स कर रखा है, बट अगर मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन के अंदर कोई गारंटी नहीं होती कि वैलिड यही वैलिडेटर जो है वो वैलिडेट करेगा, राइट, प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो वो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें। तो वहां पे वो जो इनकम है वो गारंटी नहीं है, लेकिन लेंडिंग में इनकम की गारंटी होती है। सो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इसमें, लेंडिंग और स्टेकिंग में। Right. Now, Amit, I wanted to ask you on that. You've explained what's the difference between lending and staking. Now, what's the difference between staking and liquid staking? हाँ, ये नाउ दिस Yeah. इज द न्यू टर्म। Yeah. Yeah. So let me actually take an analogy with this, right? When you are actually staking your money, when you are actually staking your asset, crypto tokens on a POS network, you are pledging those, right? Like I mentioned, and the validators are using those to validate the network, sign the transactions, and propagate the blockchain. When you are, so that means you are, the blockchain is assuring you that you have given this validator your tokens, and your tokens are on my network, right? So that's your asset. The problem, I mean, it's not a problem, it's a created problem, and it has a lot of advantages. Staking, right? Because it provides security to the network, it gives you rewards, but the disadvantage of like only staking is now you have that asset, but if you want to use that asset somewhere else to take a loan or to increase your rewards, or if you want to immediately withdraw that asset, right, you can't do that, because that is how blockchains are actually constructed, right? There is no immediate finality. You want to actually keep that asset for some time till the transactions and blocks are finalized. So on Ethereum, it's typically like 48 hours or so. On Matic, it's about 2 to 3 days, till which you can't remove your staked assets, or staked Matic or staked Ethereum, right? So you don't have immediate liquidity or instant liquidity. That's one problem with staking, right? Just like in case of a fixed deposit, when you actually put your fixed deposit in a bank, you can't there are some fixed deposits which are locked for a few years, right, or few months, or like some mutual funds are locked for 1 year, something like that. You can't withdraw your money immediately. So that's comparable to like simple staking. Liquid staking is an innovation built on top of simple staking. What happens in liquid staking is there is a smart contract sitting on top of the validators. Now, instead of people directly going and staking their assets with the validator, they deposit the assets on a smart contract.
जैसे Stader smart contract on Ethereum, they come and deposit their Ethereum on our smart contract, and our smart contract delegates it across the validators. Cool. Now, when it delegates across the validators, our smart contract acknowledges that user has given me 100 Ethereum. So it gives him a simple synthetic token, which is called liquid staking token. The liquid staking token is nothing but a proof that this user, or a proof that, or a guarantee that for every 100 ETH, you will get ETH, 100 ETH. That's in a nutshell is what liquid staking is. Now the advantages are we create AMMs, automated money markets, for these liquid stake tokens so that people can immediately swap out of that. That's one advantage. Then the second advantage of this liquid staking tokens is you can go and collateralize these on money markets like Aave or Compound or something like that, and take stablecoin loans. So that, like, you don't need to, if you want some sudden working capital, you don't need to liquidate those Ethereum or Matic. You can use your stablecoin. You can collateralize this and take stablecoins as well. Like that, there are several other DeFi applications for these assets. So एक तरह से अगर हम बोले तो we can say that staking is capital, and deep and liquid staking is efficient, efficiency. It provides capital efficiency. कैपिटल एफिशिएंसी. सो बेसिकली इट्स लाइक कि आपने 1000 रुपए थे, आपने 1000 रुपए बैंक में दी, उन्होंने आपको एक एफडी दी, राइट? और अब इस एफडी को आप कहीं पे लोन चढ़ा के यू आर ट्राइंग टू बोरो सम मनी, राइट? सो इन अ वे यू आर अर्निंग 6% इंटरेस्ट ऑन योर एफडी, प्लस दैट एफडी डज नॉट रिमेन इन द बैंक. इट्स नॉट लाइक कि आपके पास बस पेपर पड़े हुए, आपने उनको रखा, and you are able to earn some you are also able to borrow some money out of that. But sometimes this capital efficiency, उसका एक लोग एकदम ताश का पत्ता खड़ा कर देते हैं कि उस they do some crazy stuff. Like what they do is they do वो जाते हैं, इथीरियम रहता है उनके पास, उससे सपोज उन्होंने इथीरियम एक्स खरीद लिया, इथीरियम एक्स को उन्होंने आवे के ऊपर डाला, आवे से उन्होंने स्टेबल कॉइन बोरो किया, स्टेबल कॉइन से उन्होंने कर्व के 3 पूल पे डाला, उस कर्व के 3 पूल से उन्होंने उसका उसका एसेट निकाला, उसको then they put it on alchemics, and then they do stuff like that. So they try to, when you try to be over greedy, that's where the problem happens, right? And DeFi is not very secure in those matters. We have seen ki DeFi get biggest, and I would say the toppest of the top protocols which have been here since 2017-18, वो भी because of a vulnerability which is not even in smart contracts. जैसे कर्व का एग्जांपल है, उनके it was some problem in the language in which the whole the thing was coded. उसके कारण एक vulnerability किसी हैकर ने extract करके पूरी चीज को हैक कर लिया, and because of that there was such a big issue that happened around it. So what would you say first of all of people जो मतलब एकदम हाइपर एक्टिवली स्टेकिंग और उसके ऊपर ताश के पत्ते जमा करते जाते हैं? फर्स्ट दैट, एंड सेकेंडली how much of a risk is it when people do staking and liquid staking, and what is it in their mind they should have before evaluating on these things and jumping on these things? Gotcha. बेसिकली प्रणव ये कहना चाह रहा है, मैं इसको सिंपल सी बात बताऊं, जब भी कोई इकोसिस्टम बड़ा होता है ना, तो साथ में चैलेंजेस भी आते हैं, इश्यूज भी आते हैं. अब लिक्विड स्टेकिंग मैं देख रहा हूँ कि पहले लोगों को समझ नहीं आती थी, बट नाउ जैसे कि एप्लीकेशन स्टेडर लैब है, लाइडो है, अब बहुत इजी हो गया. ऑन अ क्लिक ऑफ आई थिंक 3 स्टेप्स में यू कैन डू स्टेकिंग. मेरे को लगता है कि आपको शायद 2 या 3 स्टेप, दैट्स इट. और इतना आसान होने की वजह से, और लेजर के अंदर भी आपने बोला कि मैंने इंटीग्रेट कर लिया, इनफैक्ट एक्सचेंजेस के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, आपकी वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो, एप्लीकेशंस आ गई हैं. स्टेकिंग ऐसा हो गया जैसे मतलब इट इज मच मोर इजियर देन क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया अकाउंट. तो इसकी वजह से क्या है कि इश्यूज भी, चैलेंजेस भी होंगे कुछ ना कुछ. और मैं ऑनेस्ट जवाब चाहता हूं, आई नीड अ very honest answer from you कि how
secure it is, what are the vulnerabilities, what are the issues that a normal guy who's planning to do liquid staking or put some money in the liquid staking should be aware of, right? And I want an honest answer from you so that people are aware about it. Yeah, for sure. So, with any, so firstly, there are different degrees of risks, high, medium, low करते हैं. Like when you actually stake your token with a validator, the main risk that you are taking is one, uh, slashing risk. In case the validator हाँ, doesn't perform his duties well, there is something called slashing or penalties. Generally, yeah, it's a very very rare event. Polygon में slashing नहीं होता है, BNB में अभी slashing नहीं होता है, Hedera में भी and Phantom में होता है, लेकिन it's very rare. So Ethereum में also it's a very very rare event, which is slashing, right? So that is the risk that somebody is taking. If they're simply staking with a validator. Now, liquid staking, slight risk compared to general staking. The risk is that if the smart contract gets hacked, then there might be a chance of people losing some capital. If the smart contract is not audited properly, if the team is not securing their wallets, keys properly, then there is some chance of capital being lost, right? But obviously, people like protocols have built their own safeguards around it in terms of how to mitigate some of these risks. Now, the third degree of risk is the additional smart contract risk that is being taken by users using their liquid stake tokens. Okay, that is a third degree of risk. So you take your liquid stake token, put it on a DeFi protocol. That DeFi protocol gets hacked, then your liquid stake token gets taken away, right? So all of those. This is the third degree of risk. In general, liquid staking, the risk is low if you are holding the token in your wallet, because even in case the liquid staking protocol gets hacked, the underlying funds that people have deposited in the smart contract are still with the validator, right? And if the team is good enough, they can actually salvage the funds. Okay, so in a way you're saying कि like I'll just convert a little bit and try to make it a bit simple what you said. आप बोल रहे हो एक तरह से अगर कोई स्टेकिंग कर रहा है तो स्टेकिंग के अंदर रिस्क ये है कि आपने जिस वैलिडेटर के साथ स्टेक किया वो स्लैश हो सकता है, और पॉलीगॉन पे स्लैशिंग नहीं होती, इथेरियम पे थोड़ी बहुत होती है, इट्स अ वेरी रेयर इवेंट, वेरी रेयरली समथिंग लाइक दैट हैपेंस, सो इट इज नहीं, लाइक इसमें इसमें एक रिस्क तो है जो मुझे लगता है, वो ये कि डीपेग, जैसे सपोज अगर कॉन्ट्रैक्ट हैक हो गया और मार्केट में कोई पैनिक आ गया और आई वांट टू सेल माय एसटी ईथ टू ईथ, राइट, और इनफैक्ट स्वैप माय एसटी ईथ टू ईथ, एंड मैं जब जा रहा हूँ तो देर आर मोर सेलर्स एंड लेस टेकर्स, तो मैं अपना जो मेरी जो एक ईथ की वैल्यू है उससे मैं डीपैक कर जाता हूँ, सो दैट कुड बी वन ऑफ द इश्यूज देयर। और अपने पीछे So देखा भी। Kashif, correct, like आपने correct point raise किया. This was before the withdrawals were enabled by Ethereum network. The DPEG risk was real. Real as in the market was just valuing the token at a discount because they weren't clear when the withdrawals would be enabled. But abhi, if you see, right, like the peg, like generally the peg is not lost wherever withdrawals are enabled because arbitrageurs will take care of it. ओके, सो इन अ वे वही मैं आपको बता रहा था कि स्टेकिंग में ये प्रॉब्लम है। लिक्विड स्टेकिंग में ऐसा होता है कि 1:1 है ना, तो अगर आप अपना एक ईथ एक्स देते हो स्टैडर के ऊपर तो आपको एक इथेरियम दे देंगे, और अगर देयर इज सम कॉन्फिडेंस लॉस्ट इन स्टैडर और रॉकेट पूर और लाइडो, सो द टीम और द पीपल कैन इन जनरल मेक दैट स्वैप। पहले ऐसा नहीं हो सकता था बिकॉज इथेरियम में ऐसा था कि हमने स्टेकिंग चालू कर दी है, विड्रॉल चालू नहीं किया है, वो उसके लिए देयर इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपडेट दैट विल हैपन एंड देन ओनली अ विड्रॉल कैन हैपन। और उस समय पे एसटी ईथ मेरे को याद है वो अंडर मतलब वो बहुत ज्यादा डीपेग हो गया था, इट वाज डीपेग्ड बाय अ क्रेजी अमाउंट एंड दैट क्रिएटेड अ होल बिग ऑफ एन इशू in the whole industry. Yeah. So that does exist, but what you are saying is कि अगर कोई liquid staking कर रहा है, so it is the staking में तो सबसे कम है degree of risk that is involved because slashing is a very rare occurrence. Liquid staking में थोड़ी सी risk यही है कि like if the smart contract on which that functionality is based, तो ऐसा हो सकता है कि there is some chance that you know something you might not get if you put one, you might not get one back, you might get a small discount 0.9 or 0.8,
Arbitrageurs normally take care of it, but if there is a big sell-off and there is very little to buy from, तो थोड़ा सा आपको एक डिस्काउंट मिल सकता है, that might exist. बट वो जो लिक्विड स्टेकिंग एसेट है, वो अगर आपने किसी डीफाई प्रोटोकॉल में डाल दिया है और वो डीफाई प्रोटोकॉल हैक हो गया, तो आपका जो एसेट है जो बताता है कि आपके पास एक इथेरियम है, यानी जो ये ईथ एक्स है, वो भी लॉस्ट हो जाएगा, भी चले जाएगा, और आपका जो अंडरलाइंग इथेरियम था वो भी आप वापस नहीं ला पाओगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क दैट यू हैव टू, इफ यू आर गोइंग फॉर वेरी लो रिस्क, go for staking. If you're going for a small considerable risk, go for liquid staking. और आपको बहुत ही ज्यादा तूफानों से खेलना है, माउंटेन ड्यू पी के, like you want to तूफानी करना है, so then you should go for a DeFi. और उसके अंदर भी डिफरेंट, अगर आप आवे पे जाते हो तो शायद रिस्क कम होती है, बिकॉज उनका $300 million का there is a fund to recap, to like there is a fund in which if something get hacked, then they can replenish that particular thing. अगर आप आवे की जगह किसी और पे जाते हो, so there are different things that exist over there. So coming back, this is a great explanation. First of all, liquid staking का और risk involved का in staking issues के साथ, so that is great. But अब liquid staking के भी different versions आ गए मार्केट में. रॉकेट पूल एक तरह की स्टेकिंग प्रोवाइड करता है, लाइडो एक तरह की स्टेकिंग प्रोवाइड करता है, कॉइनबेस ने बाय द वे अभी आरपीएल टोकन एक बहुत बड़े अमाउंट में खरीदा है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिफरेंट वैल्यूज दैट दीज लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स ब्रिंग? मतलब क्या स्टैग्नेंट एपीवाई मिलेगा लोगों को अगर वो डिफरेंट लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स पे जाएंगे? व्हाट द डिफरेंस एंड हाउ इज स्टैडर टेकिंग दैट अप्रोच, और कितना एपीवाई मिलता है स्टैडर के जो 3 टॉप प्रोडक्ट्स हैं, पॉलीगॉन, इथेरियम और नियर पे? Gotcha. Polygon, Ethereum, and BNB are the major ones. Yeah, BNB. So different, right? Like basically on Polygon, the V and Lido are probably the market 1 and 2 players. So we have the highest yield. I think we give about 4.35% in terms of net rewards to users. Like decentralized set of validators है, almost like 10K आसपास validators है, so that we are not concentrating the stake in one validator, we are splitting it across multiple validators. And then Polygon Pay, we have a very differentiated offering. If a particular user wants to select a specific validator, we can also enable that. So like that, a lot of users are using our liquid staking solution, and we have the deepest integrations on Polygon across Ledger, OKX, all of these. Plus, on top of that, we have Aave integration, Compound integration, multiple DEXs pay, and options protocols pay, Sara integrations. So that's the thing we have on Polygon. Similarly, on BNB, we have several integrations with DEXs, lending markets like Venus, all of these, right? So beyond this, on Ethereum, we have a very, very differentiated value proposition where we have enabled something called a permissionless node operators. Anybody can spin up a validator with Stader without even asking us, without doing any KYC, by bonding 4 ETH and 0.4 ETH worth of our own tokens, which is SD tokens, right? So using that, anybody can spin up a validator. Like that, there are some 130 validators who have already spin up about 350, 400 validators with us within 3 weeks, right? That's the main thing on Ethereum. So on Ethereum, our values are like, we want to enable accessibility to staking on Ethereum for a large number of validators, because there is always a threat of any kind of a US government or any of the major governments asking these validators to shut down. So permissioned validators or KYC validators is always a major concern for a lot of stakers, right? So that's why you need to make the network as decentralized as possible with a highly decentralized set of validators, right? That's one of the major values we have embraced on Ethereum by enabling this permissionless operators to run their validators with us. That's for the validator side. Now users can stake any amount, even 0.01 ETH also. They can deposit with us and take ETHX and use the ETHX to generate higher rewards across DEXs.
All right. That's a great insight. But Lido or Rocket Pool में what's the difference between these three different liquid staking, like वो अलग-अलग क्या है? उनके Gotcha. APY अलग हैं या what's the So APYs are relatively similar. Rocket Pool has a slightly lower APY. Lido, I think today has about 3.8%. We also are giving 3.8%. Since we launched about a month ago, we are subsidizing that rewards. But in the long run, like we want to keep, because our commissions are also competitive, 10%, but Rocket Pool charges about 15% as the commission. So that's why their APYs are lower. So that's the difference on the APYs. In terms of the models or the product, Lido is all permissioned operator set. They have 29 operators to which they delegate. Their biggest disadvantage is regulatory disadvantage, right? Like any governments, if they actually can yeah. shut down Lido by going after all of these operators, they can potentially do that, right? With Rocket Pool has a decentralized set of node operators. They enable operators to join permissionlessly with Rocket Pool. But the capital entry barrier is very, very high. A node operator needs to bond 8 ETH worth of capital plus 2.4 ETH worth of RPL tokens, which is almost, I mean, you can say it's a $25,000 to start one validator. This is significantly high barrier, but with us, we have brought down that barrier to $4.4 and very limited exposure to our governance token. All right. Right. So All right. that's we are creating this accessibility for these node operators. Right. अब मैं I would want you to point on something जो कि मतलब industry wide discuss हो रहा है. ये थोड़े दिन पहले this was a tweet that Ajit Tripathi made, giving him credits कि Ethereum ecosystem ये है और Lido का code is what the whole Ethereum ecosystem is lying on, and the reason behind that is if you see over here, right, you will see about $14 million worth ST लोगों ने Ethereum डाल के ST निकाला हुआ है, and that's like a small percentage, but that keeps growing. The market cap of ST is keeps going because किसको 4% APY अच्छा नहीं लगता, सबको 4% APY चाहिए. तो ऐसा भी लोग बोलते हैं कि Ethereum की market cap को एक दिन ST की market cap या ST रॉकेट पूल स्टैडर के लाइडो ETH ये तीनों मिला के इथेरियम की मार्केट कैप को शायद टॉगल कर दें, एंड इट माइट हैव अ हायर मार्केट कैप. एंड दिस इज क्वाइट कंसर्निंग बिकॉज 2017 के अंदर भी एक द डाओ टाइप का हैक हुआ था जिसके अंदर लोगों ने अपने पूरे के पूरे इथेरियम जो थे वो उस डाओ के अंदर डाल दिए थे, और 1/3 ऑफ द होल इथेरियम दैट वाज एवर मिंटेड वो उस डाओ के अंदर थे. And then there had to be a hard fork so that that hacker did not use the funds and dump it on people when the prices rise and everything. So that was a big issue back then. वैसा ही अब ये लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वापस इथेरियम के प्राइस को शायद ऐसा कर दें बिकॉज द डोमिनेंस of ST ETH, Rocket Pool ETH, and Ethereum X or Stader might be more than Ethereum, or it might be comparable. और अगर ऐसा होता है, if that particular small nib that Ajit Tripathi shared goes down, then there has to be another fork that will have to happen. तो ये क्या लिक्विड स्टेकिंग एक तरह से एक प्रॉब्लम बनती जा रही है इथेरियम इकोसिस्टम के लिए, given that the kind of value it is containing, or do you think it can still be constrained and it is not a big issue, it is rather making capital more efficient in Ethereum and in general in the world around assets? It's a double-edged sword, right? So basically people, as Ethereum staking rewards go down, right, like as higher and higher amount of Ethereum goes into staking reward rate will go down. That means people need additional avenues to make extra rewards, right? So the only way to do that is via liquid staking. So liquid staking is a very important component for crypto ecosystems. Now, the question that we need to ask is like, how should we make this, how should we ensure that this is not a single point of failure for the entire blockchain? That's why you should probably have like multiple liquid staking protocols and then reduce the concentration and also make these liquid staking protocols more robust. Multiple audits, as long as they are on the network for like a reasonably longer period of time, and then there should be some precautions against like any kind of a negative or
or a hacking kind of an event by continuously going through several audits. All of these are precautions that one should take. It is, I mean, to answer, long story short, it is essential, and there are ways to mitigate the risks by reducing the concentration in one protocol, ensuring that protocols are getting more and more robust day by day and less vulnerable to any hacking kind of an incident. Right. That's great. And I feel that's what the people should keep in mind before going for liquid staking. If they are going for staking, they are looking for rewards, and when they are looking for rewards, they might be endangering. But it's also the risk is pretty low. But you have to assess your risk before going forward to any of these. So that being said, I would give a small demonstration of how Stader works, given that Amit is here, right? So basically, I come to a network and let's say I have Ethereum or let's say I have Polygon. So I go over here on Polygon and I just put my let's say 10,000 Matic and I get Matic X in return, right? And I can stake and I can earn, like it will tell me how much reward I can earn, right? That's about it. That's like 4.8%. So if I put 10,000 Matic, I would get every year about 4.8, yeah. 482 Matic. You will get 482 Matic per year. And if I had 10,000 and I keep it for 1 year, I'll just have 10,000, and if I put it on Stader, there is a chance I might be able to earn these 482 Matic. And the way it works is you get Matic X in return. And these Matic X, you can go for just, just putting it on Aave or just putting it on loan and earning extra APYs. So on top of 485 APY Matic, you might also be able to earn other ways you can earn extra rewards. Extra rewards. So Yep. that's how normally efficient DeFi is trying to be. Although there are nuances to it, but this is how capital efficient DeFi is trying to be. On 10,000 Matic, if you do liquid staking and some kind of lending, you can earn roughly or around 1,000 Matics, if I may say, per year, and that's like 10% APY, which is the highest in, at least in the Western world. India में तो फिर भी लोग दे देते हैं इस तरह का lending rate और borrowing rate, lending rate, but Western world में 0.5% saving rate की जगह उनको 10% अगर APY मिलेगा, so that's where the future of I think that's where the future of efficiency and financial asset management might lie. Kashif, any closing thoughts? Mute पे आप. Once again, thank you very much, Amit, for this. Once again, a gentle reminder for our audiences कि ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नंबर वन. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है. हमने रिस्क अभी डिस्कस किए. ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. और न्यू टेक्नोलॉजी है, नया स्ट्रीम है, और इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी हैं और जो इश्यूज़ हैं, वो भी हमने डिस्कस किए और इसके फ़ायदे भी हमने डिस्कस किए. बट ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. द होल ऑब्जेक्टिव इज़ कि लिक्विड स्टेकिंग के पीछे जो इतना नॉइज़ है, इतना आप आर्टिकल सुनते हैं, इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतनी बातें सुन रहे हैं हर वक्त, और बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं कि लिक्विड स्टेकिंग पे शो करिए. तो आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट शो व्हिच वी वांटेड टू डू. सो थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू वेरी मच प्रणव फॉर दिस थिंग. एंड यू कैन फॉलो अमित ऑन. अमित, आपको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? दे हैव टू फॉलो यू. They can follow me on Twitter. They can follow you on Twitter. @GAmitej is my Twitter account ID. राइट. आप स्टैडर लैब्स को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे. एंड या सो इफ यू कैन जस्ट या राइट. चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड फिर से मिलते हैं किसी दिन किसी और शो में. थैंक यू अमित. Absolutely. Thank you very much, Pranav and Kashif.